Can you give me a recap? Give me a small recap in the chat कि आपने अभी तक क्या सीखा है, what you have learned in the last class and previous classes, how much of it is done. See, if you all are going to be active, then we can, make the class a bit faster. Himal, can you give me a summary of the last class? Tailwind CSS basics. All right. So today we'll be learning a bit different topic. Okay. Before we get into this Tailwind CSS React and everything, firstly, let me know if my screen is visible to you. Okay. Just give me a moment. I'll be sharing the screen. Confirm in the chat if it is visible to you guys. All right. So have you heard about GitHub? Please let me know. Have you all heard about GitHub? ने यूज किया GitHub को? Anyone here? किसी ने GitHub पहले यूज किया है? Yes, all right. Chalo. So I'll still give a basics key. What is it? Okay. GitHub is firstly a cloud-based platform, right? जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब में आप वीडियोस होस्ट करते हो, आप वीडियोस शेयर करते हो, आप देखते हो वीडियोस को, राइट? Similarly, other cloud platforms, AWS, where you get your servers and everything. Similarly, GitHub is a hub, is a cloud-based platform for Gits. Okay? For Git. Now, before we understand what is a Git, थोड़ा सा history जान लेते हैं about GitHub. Firstly, currently it is being owned by Microsoft. ठीक है? Who's the owner? Owned by Microsoft. It was acquired in 2018, if I am not wrong. ठीक है? And it was created in 2008. चलो. Now what is a Git? ठीक है? Git is a distributed version control system. ठीक है? Now, what is a version control system? Versions आपको पता है, you give install some apps, तो उसके नए versions आते रहते हैं, right? You might be playing some games, then a new version of the game comes in with some updates, and then you install it again, right? So how does that work? How do you create versions of apps? Upgrades कैसे लाते हो? Through this Git, right? Git के version
कंट्रोल सिस्टम से, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स अस. सो फर्स्ट थिंग देखो, जैसे हम एक ऐप बना रहे हैं, ठीक है, लेट मी build an application. So I'm building an application. Let's write, let's समझते हैं उसको, it's an e-commerce platform or probably yeah, e-commerce समझते हैं, ठीक है, चलो e-commerce platform we are building. Now e-commerce platform के बहुत सारे फीचर्स होंगे, है कि नहीं? The first could be your let's say एडमिन एप्लीकेशन होगा. एडमिन एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे होंगे, बट स्पेसिफिकली हम लेंगे कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन. कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन में एक आपका लेट्स से वॉलेट होगा, ठीक है, इनबिल्ट वॉलेट होगा, राइट? देयर इज अ रिव्यू सिस्टम, ठीक है, जब आप कुछ भी परचेज करते हो, राइट अ रिव्यू, देयर इज अ रिव्यू सिस्टम, ठीक है. थर्ड क्या ले लेते हैं, देयर इज अ लेट्स से कैटलॉग सिस्टम, ठीक है, हम प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाते हैं. So I'll write the third thing as catalog system. Now imagine कि एक टीम ये तीनों चीजें बना रही है, ठीक है, वन पर्सन इज मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, इट वुड बी वेरी हेक्टिक, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा इस चीज पे. सो व्हाट वी वुड डू, वी वुड स्टार्ट हायरिंग मल्टीपल पीपल, ठीक है. बट अगर मैं पूरा का पूरा सोर्स कोड ही किसी को पकड़ा दूं, वो तो कुछ भी कर सकता है ना. ही कैन मे बी मेक दैट सोर्स कोड पब्लिक, लाइक आपकी रातों रात कंपनी चली जाएगी, राइट? सो what happens if you're going to make the source code public, right? He can copy the source code, वो खुद की कंपनी बना सकता है आपके सोर्स कोड के ऊपर, राइट? देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग. तो हम क्या करेंगे, वी वांट दैट दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, छोटे छोटे कोड्स का चंक का एक्सेस हो. ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. या सो यू नो हो जा रहा है कि हम अगर सारे चीजों का एक्सेस एक बंदे को दे देंगे, दे कैन थेफ्ट इट, सोर्स कोड वो पब्लिक कर सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकते है, कुछ भी हो सकती है. सो हम उसको बहुत सारे चंक में बांटते हैं, एंड वी गिव ओनली परमिशन ऑफ एडिट एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल ओनली. ऑलराइट, सो जैसे वॉलेट पे मे बी लेट्स से सुमित इज वर्किंग, तो सुमित ने क्या किया, ब्रांच बना लिया है, ठीक है, फॉर वर्किंग ऑन दिस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, द स्टूडेंट इज फेसिंग joining the class. एक सेकंड ना. ऑलराइट, ठीक है, तो हम ब्रांचेस बनाते हैं, सुमित काम कर रहा है. फिर हमने एक रिव्यू सिस्टम का ब्रांच बना लिया, यहाँ पे अमित काम कर रहा है, ठीक है. ऊपर से कैटलॉग सिस्टम का हमने ब्रांच बना लिया, ठीक है, इसमें लेट्स से वर्षा काम कर रही है. सो इट इट गोज ऑन लाइक दिस. अब लेट्स से हमने इस प्रोडक्शन में हमने कोड को पुश कर दिया है, बट वर्षा ने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, लेट्स से शी डिड अ मिस्टेक, और वो कोड पुश हो जाता है. नाउ द एप्लीकेशन वोंट बी रनिंग, राइट? एप्लीकेशन से काम नहीं कर रहा होगा. सो व्हाट कुड वी बी डूइंग, हम पुल बैक कर सकते हैं उस वर्जन को, राइट? लेट्स से कि इस अपडेट से पहले लेट्स से देयर वाज अ वर्जन दैट वाज बीइंग पुश्ड, लेट्स से इट वाज वर्जन 5, ठीक है. जब हमने वर्षा का कोड पुश किया, सो वी अपडेटेड द वर्जन, हमने इसको वर्जन 5.1 कर दिया, 5. कुछ भी हम कर दिया, हमने कर दिया, राइट? ठीक है. अभी क्या हुआ कि वी फाउंड ए बग एन एरर, बट हम पूरा वेबसाइट नहीं डाउन करना चाहते हैं. सो व्हाट वी वुड डू, वी वुड take this version 5.1 and give it back to version 5, जब तक हम वो एरर रिजॉल्व करें. नाउ दिस एरर रिजॉल्विंग कैन टेक अ डे, अ वीक, अ मंथ. जब भी वो रिजॉल्व हो जाएगा, वी कैन देन गो फ्रॉम वर्जन 5 to 5.1 again. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एज दैट. ठीक है, यू ऑल कैन इंस्टॉल ऑफलाइन गिट, ठीक है. तो मैं गिट पे जाता हूँ, इंस्टॉल ऑन मैक ओएस, इंस्टॉल ऑन विंडोज.
ठीक है। सो आई वांट एवरी वन ऑफ यू कि आप इसको इंस्टॉल करके रखो। ठीक है, इस हम वेबसाइट के भी थ्रू जाते हैं, बट बिफोर आई शेयर द लिंक विथ यू। चलो, लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। ठीक है, गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जैसे हमने बात किया, डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स। ठीक है, विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अगेन हमने बात की कि वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसे वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, नए वर्जन डाल सकते हैं, पुराने वर्जन पे जा सकते हैं, कुछ ब्रांचेस को हटा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप GUI वगैरह होस्टिंग जो भी, आप हर तरीके से इसको यूज कर सकते हो। यू कैन यूज थ्रू GUI, can use through command line tools as well. ठीक है, I have a Mac, I can install via Mac. If you will be having a Windows, आपको उसका ऑप्शन मिल रहा होगा। So guys, please install it। ठीक है, कोई एरर आता है तो मुझे बताओ, I'll give you 5 minutes। ठीक है, इसके लिए let me know how many of you have installed it। किसी ने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है गिट को? गिट को ना ऐसे आप एज ए ट्री समझो। ठीक है, कि लेट्स से आप ट्री यहाँ से ऊपर से चलो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, लेट्स से ऊपर के नीचे की तरफ आ रहा है, एंड ब्रांचेस होंगे। ठीक है, कि जैसे हमने फर्स्ट वर्जन में लेट्स से ई कॉमर्स में सिर्फ ऑर्डर सिस्टम दिया, कि आप सिर्फ ऑर्डर सिस्टम ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, आप ऑर्डर ट्रैक नहीं कर सकते थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे इनिशियल सिस्टम में। फिर इसके कुछ ब्रांच निकले। ठीक है, हमने सेकेंड वर्जन में क्या किया, हमने ऑर्डर के साथ साथ लेट्स से वॉलेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि वॉलेट सिस्टम को हमें इंप्रूव करना था, सॉरी ऑर्डर सिस्टम को लेट्स से हमें इंप्रूव करना था, तो हमने ऑर्डर सिस्टम में ही ट्रैकिंग सिस्टम भी डाल दिया। ठीक है, आप ऑर्डर ट्रैक भी कर सकते हो आप, पर मैप्स पहले नहीं थे। ठीक है, सिर्फ आप देख सकते थे कि कब क्या ऑर्डर आपके पहुंच रहा है। तो हमने इसी सिस्टम में आगे फिर जा करके मैप्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या, इसी वॉलेट को हमने जब ये वॉलेट बनाया था, हमने हो सकता है इसमें सिर्फ नॉर्मल पैसे रखने का दिया होगा। बाद में हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस इज वर्किंग लाइक अ ट्री। ठीक है, ऑलराइट। सो आपको गिट इंस्टॉल करना है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, सो दैट यू कैन, क्या है कि गिट का देखो आपको बहुत ज्यादा ऐसे काम पड़ेगा नहीं छोटे प्रोजेक्ट्स में, बट आप बड़े प्रोजेक्ट जब बना रहे हो तो आप ऑफलाइन गिट को मैनेज कर सकते हो, वर्जन्स को मैनेज कर सकते हो बिफोर यू गोइंग टू पुश इट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज, इस गिट के इस गिट के रिपोजिटरी को, इस गिट के क्लाउड को हम क्या बोलते हैं, गिटहब। हमें पता चला, राइट। चलो हम गिटहब का भी साइट देखते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ योर गिटहब लुक्स लाइक। ठीक है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप कोलैबोरेट करते हो बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, यू कोलैबोरेट विथ योर टीम। ठीक है, दे कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपका हो सकता है टीम मेंबर यूएस में बैठा हो, योर टीम मेंबर, अनदर टीम मेंबर माइट बी इन जर्मनी। ठीक है, थर्ड वन इज सिटिंग इन इंडिया। तो ऐसे आप मल्टीपल लोकेशन से लोगों को मैनेज कर सकते हो, दे कैन पुश योर कोड। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। देयर इज अ गिटहब कोपायलट, बेसिकली इट इज एआई दैट हेल्प्स रन प्रेडिक्ट कोड्स। ठीक है, कर सकते हो आप, एआई है वो। ठीक है, कोड रिव्यूज हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप जा सकते हो, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एवरीथिंग। लेट्स सी व्हाट आर देयर इन सॉल्यूशंस। ठीक है, CI/CD पाइपलाइंस वगैरह यूज केस के हिसाब से चीजें हैं, यू ऑल कैन एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग्स बाय योरसेल्फ। चलो ठीक है, नाउ ओपन सोर्स। ठीक है, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जो हैं जो गिटहब के ऊपर ही रिलाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर, हैव यू एवर यूज्ड VLC मीडिया प्लेयर? Have you ever used VLC media player? Everyone, I have asked a question. Have you used a VLC media player? You have not used email? Okay, कोई बात नहीं है. Let me just search it and show it to you. ठीक है. ठीक है, ये लोगो किसी को याद है? अभी अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, बट अर्लियर व्हेन वी यूज्ड टू वॉच मूवीज, वी हैड टू डाउनलोड इट। ठीक है, एंड वो उस समय प्लेयर्स कम थे। ठीक है, जो इनबिल्ट विंडोज के प्लेयर्स आते थे, दैट वर नॉट गुड इनफ। ठीक है,
so you could enhance sound in VLC media players. ठीक है, shortcuts बहुत अच्छे काम करते थे, right? So all these things were there in VLC media player. And the best part about VLC media player was there was no ads and it was free of cost to use. But आप एक बार सोचो, just think of it. If a company is building something, why they are going to build it for free? है ना? Because companies have to earn to keep their products running. So there are certain softwares जो आप फ्री में यूज करते हो और are the open source softwares. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, देयर इज नो वन सिंगल मालिक, ठीक है, कोई बॉस नहीं होता इसका. द प्रोडक्ट इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय एवरीवन, ठीक है, हम सब कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें, ठीक है. द कोड इज ओपन सोर्स इन द सेंस कि कोई भी उस कोड को देख सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है एंड देन कैन आल्सो मेक योर ओन वर्जंस, ठीक है. तो बहुत लोगों ने वीएलसी मीडिया प्लेयर का बेस कोड यूज करके अपने खुद के प्लेयर्स भी बनाया है. ऑलराइट एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर. सो देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी होते हैं, जैसे उनका द ऑफिस 365 that you use the proprietary software, that is the paid software. You have to pay to use those softwares, ठीक है. But open source softwares are those softwares जो कि आप पे नहीं करते यूज करने के लिए. Now, if I go here and I just search, मेरे को नाम नहीं पता, ठीक है, but let's say if I go and search PowerPoint, let's say मैं search करता हूँ PowerPoint, okay, open source alternative, ठीक है. देखो यहाँ पे, देखो मेरे को बहुत सारे आ जाएंगे, लाइक लिब्रे ऑफिस, ठीक है, इट्स एन ओपन सोर्स अगेन. तो आप इसके कोड्स वगैरह भी देख सकते हो, जैसे लिब्रे ऑफिस है, ठीक है. सो आई गो एंड सर्च हियर गिटहब, ठीक है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो कि उनका हर एक चीज like it's like open, right? So basically you can see the codes and everything, ठीक है. You can see there's 1.7k followers, ठीक है. What all stacks they are built upon, ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं. If I just open, let's say any one of those, for example, if I go and open this core, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे चीजें. You can see that these were updated 3 minutes ago, ठीक है. So कुछ कोड पुश हुआ था एंड उस कोड में व्हाट वाज द मैसेज, यूज नेम कंटेनर्स ओनर एज इवेंट सोर्स, ठीक है. यू कैन सी देयर आर 1464 contributors to it. So अब सोचो, so this specific project is being built by thousands of people, right? यहाँ पे 1400 people have contributed to it. आई होप दैट इज क्लियर व्हाट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पे हर कोई कर रहा है, इसका स्टैक क्लियर है कि ये क्या यूज कर रहे हैं बैकएंड में. सो सी प्लस प्लस इज अ मेजर कोडिंग लैंग्वेज जो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं. दिस जावा एज वेल, देयर इज पाइथन एज वेल, ठीक है. नाउ इफ आई लेट मी जस्ट ओपन एनी वन ऑफ दोस, लेट्स ओपन दिस वन, बेसिक, ठीक है. सो यू कैन सी द फोल्डर स्ट्रक्चर, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हो कि what all things are there, what all are there. Now there is a readme.md. Does anyone know what is a readme.md? I'll give you a minute, please write it down in the chat. So your md stands for basically markdown, ठीक है. So it's an extension. And नाम से आपको पता चल रहा होगा, readme means what? It's a documentation file जहाँ पे आप read कर सकते हो about the project, ठीक है. अब जैसे क्या है ना कि कोई भी आपका लाइक मैंने बताया कि जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो सो मेनी पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट. अब कोई नया बंदा आ रहा है, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोजेक्ट, ही माइट नॉट नो कि क्या चल रहा है इस प्रोजेक्ट में, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, है ना, इस फोल्डर में हमें क्या क्या अपडेट करना है, राइट. तो उसके लिए क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक रीडमी फाइल बनाते हैं जहाँ पे जैसे कुछ है कि यहाँ पे जैसे स्टार बेसिक इंटरप्रेटर, ठीक है, कंटेन्स स्टार बेसिक इंटरप्रेटर, ठीक है. तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, सो दैट व्हेन पीपल अदर पीपल कम, दे अंडरस्टैंड व्हाट द कोड इज अबाउट, व्हाट द प्रोजेक्ट इज अबाउट, ठीक है. ऑलराइट, so they can know what is this project about, how can they can install it, how they can use it, and any other details that are there that we need to tell them. I hope this is clear to you. What is a readme file?
I'll be creating a poll, ठीक है? Please answer everyone. I've started the poll. Please answer that. Everyone, please answer the poll. There are 17 students in this class. Only 6 people have answered the poll. There is no problem कि अगर आपके पास GitHub profile नहीं है. Do not answer wrong in the poll, ठीक है? Don't go and write yes if you do not have a GitHub का profile. Everyone's 50% people have not even voted yet. चलो ठीक है. देखो, जिसके पास भी GitHub का नहीं है प्रोफाइल, प्लीज गो एंड क्रिएट अ प्रोफाइल इन GitHub, ठीक है? So this is called a repository, ठीक है? I'm sorry, not repository. ये तो overview of the account they have. So these are the repositories, ठीक है? अगर मैं किसी एक repository को खोलता हूँ, ठीक है? So this is how the repository looks like. You can have some about it, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने इसको फॉक किया हुआ है, ठीक है? व्हाट आर द एक्टिविटी टाइमलाइन, आप इसको चेक कर सकते हो चीजें, ठीक है? हम एक एक वर्ड समझेंगे, व्हाट इज एवरीथिंग, ठीक है? क्या क्या चीजें हैं. यू कैन सी कंट्रीब्यूटर्स का लिस्ट हियर. अभी इसका रीडमी फाइल होगा नीचे, ठीक है? इफ आई गो डाउन आई विल फाइंड अ रीडमी फाइल. देख सकते हो आप यहाँ पे, दिस इज अ रीडमी फाइल, ठीक है? इट्स जस्ट सेइंग दैट it's an integrated office suite, ठीक है? Here it is, it's open source initiative. These are the tags that you can write, ठीक है? आप इसको edit कर सकते हो खुद से चाहो तो, ठीक है? Everything is being mentioned here, ठीक है? What all modules are there, ठीक है? आप कहाँ पे documents इसका चेक कर सकते हो, docs के लिंक है यहाँ पे. If I click on this, I can see all the docs here, ठीक है? चलो. Now, if I go, here on this branch, I can see यहाँ पे देखो कितने सारे branches हैं. So people work on these branches, ठीक है? बहुत लोगों ने बहुत सारे branches बनाए हुए हैं. Now, what are these branches? Again, मैंने यहाँ पे discuss किया था. You see, if I go down, you see ये एक tree की तरह है. The first branch came out to be order system. इस order system में ही हमने एक branch बनाया maps का. Sorry, track का हमने branch बनाया. Then track पे हमने बनाया maps का एक branch. So ये सारे branches आप यहाँ से देखते हो, ठीक है? In this area, ठीक है? So there are 751 branches. All right, everyone. Now, there is a pull request, ठीक है? So what is a pull request? So let's say आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. अभी क्या हुआ कि लेट्स से जयंत इज देयर, ठीक है? जयंत भी उसी प्रोजेक्ट में मेरे साथ है. उसने कुछ कोड पुश किया. अब मैं भी अपना कोड पुश करना चाह रहा हूँ, ठीक है? बट क्या होगा ना कि क्योंकि मैं जो कोड पुश कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी जयंत का कोड नहीं है, इट हैज ऑलरेडी वेंट देयर. सो दैट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स. So what I would do before pushing it, I'll pull the code. क्या कोई raw code, कोई और code गया हुआ है? And when I pull that, I will have some conflicts जो मैं locally solve कर सकता हूँ. I'll solve it and then I'll push my code to the whole system, ठीक है? तो पूरा का पूरा repository होगा उसमें. I hope this is clear. Once that is being pushed, maybe उस जो admin होगा उस repository का, who is managing that, can merge, your the thing that you have pushed to the whole source code जो proper उसका code है, right? So you will have to create a merge request वहाँ पे.
I hope this is clear, everyone. Hello. Thanks, Sumit. Chalo. Let me just close this. Let me see अगर कुछ बात हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आप एक्शंस में देख सकते हो। ठीक है, जून 17 देयर वाज सम फीचर जो इन्होंने पुश किया था, राइट, बट इट वाजंट एक्सेप्टेड। ठीक है, कुछ बग फिक्स हुआ था। ठीक है, इफ आई जस्ट ओपन दिस वन, सो यू कैन सी क्या क्या चीजें हुई थी, हु triggered this pull request. ठीक है, the status is success, right? If I go here, ठीक है, तो आप यहाँ पे चीजें आप देख सकते हो, नोटेशन देख सकते हो। ठीक है, वर्कफ्लो का फाइल आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी। ऑलराइट, लेट मी जस्ट क्लोज दिस नाउ। I hope Git and GitHub is clear to you all. Now let us go to the Visual Studio Code. I hope कि everyone has opened this Visual Studio Code. Let me know guys. सबने खोला हुआ है? चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट। ठीक है, एंड रिएक्ट के साथ साथ ही हम टेलविंड भी सीखेंगे, एंड हम आगे नेक्स्ट जेएस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट इन इटसेल्फ इज नाउ एब्सोल्यूट। कोई भी रिएक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं करता है। इफ यू गो एंड सर्च फॉर इट, आपको दिखेगा आप तो रिएक्ट वाई के साथ यूज करो, यू इधर यूज रिएक्ट राउटर, यू यूज स्टैंडस्टैक राउटर, यू यूज नेक्स्ट जेएस, यू यूज बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो एंड लेट्स से इंस्टॉल टेल टेलविंड इन रिएक्ट, अगर मैं सर्च करता हूँ, देखो फ्रेमवर्क वाइज यहाँ पे मेरे को गाइड्स हैं इसमें। यू सी देयर इज नेक्स्ट जेएस, लारावेल, नक्स्ट जेएस। ठीक है, देयर इज रिएक्ट राउटर। ठीक है, एम्बर, एस्ट्रो, क्विक। कहीं भी आपको रिएक्ट दिख रहा है इन इटसेल्फ? कैन यू फाइंड रिएक्ट गाइस? लुक एट दिस पेज। ठीक है, मैं ये भेज रहा हूँ आपको। कैन यू फाइंड रिएक्ट हियर एज लाइक रिएक्ट इंडिपेंडेंटली? आंसर मी द क्वेश्चन, ओके? क्या आपको वहाँ पे रिएक्ट दिख रहा है कहीं पे भी? नोप्स, राइट? क्योंकि रिएक्ट अब यूज ही नहीं होता डायरेक्ट इन इटसेल्फ। नाउ पीपल गो विथ अ फ्रेमवर्क। ठीक है, रिएक्ट इटसेल्फ इज अ लाइब्रेरी, पीपल ट्राई टू यूज अ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम सिर्फ आज की क्लास में समझेंगे कि व्हाट इज अ सिंपल रिएक्ट। ठीक है, आज भी वो कोड काम करता है। ठीक है, लकीली नेक्स्ट क्लास से हम इधर रिएक्ट विथ राउट वाइट यूज करेंगे और रिएक्ट राउटर यूज करेंगे। दैट विल डिपेंड ऑन सर। सो टुडे सर कुड नॉट टेक द क्लास, yesterday who took it, he is sick actually, इसके वजह से भी लास्ट वीक का क्लास पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, चलो, if I go here, I am inside sorry, let's go to the terminal. Everyone open the terminal, okay? Okay, control plus backtick is the shortcut. If you have set any other shortcut, you can use that. Otherwise, you can go to terminal and click on new terminal. ठीक है, यहाँ से एक नया टर्मिनल आ जाएगा। So I am inside this Goburu folder जो यहाँ पे बना हुआ है। I'll make a folder here. ठीक है, so I will use a and I will make let's say React. ठीक है, मैंने React नाम से एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, you can see a React folder has been created. I'll use this command npx create React app at the rate latest, and I'll give it a name. ठीक है, so let's give it you know a name, my first app. ठीक है, it is taking time. ठीक है, 1 मिनट से 2 मिनट लेगा क्रिएट करने के लिए। प्लीज रन दिस कोड, ओके? I'll just copy here. Everyone install Node.js. Please tell me, otherwise this won't work. सबने Node.js इंस्टॉल किया हुआ है? Please write in the chat, everyone.
Thank you. ठीक है. Now I have ran this code. I'll give you a minute. ठीक है, before I jump, please try creating this. Okay. Sorry guys. So React के अंदर क्यों नहीं create हुआ? इसका reason ये था कि मैंने गलती की. So what the mistake I did was I ran this without changing the directory. ठीक है. So I'll just, I can go through here, but I'll probably delete it. ठीक है, to show you how things work. ठीक है. So let me just clear it up. देखो अभी मैं गोबरू के अंदर ही हूँ. So I'll change my directory. I'll go and I'll change it to React. ठीक है. Let me write it in caps. Now I am inside React. ठीक है. Now if I want, I can run this command. And now it will create a my first app नाम का folder inside React folder. ठीक है. Please do this everyone. एक बार हो जाए, please confirm that you have done. जैसे हो जाए प्लीज कंफर्म. आज हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे. ठीक है, कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है. नाउ व्हेन यू विल बी यूजिंग नेक्स्ट.js, देयर विल बी स्लाइट चेंज इन फोल्डर स्ट्रक्चर, बट ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता. ठीक है. इनफैक्ट आई फील, दिस इज माय फीलिंग, कि नेक्स्ट.js इज इजियर. ठीक है, क्योंकि वहां पे राउटिंग, मैनुअल राउटिंग नहीं करनी पड़ती. फाइल स्ट्रक्चर बेस्ड राउटिंग होती है. ठीक है. तो वो चीजें आपको सर समझाएंगे कल के क्लास में. Please confirm once you have ran this code. ये सबने प्लीज कंफर्म वंस. No one active, या फिर you all are doing it, or am I not audible? Guys, it's been 5 minutes. I'll wait for 2 more minutes.
want to be very clear, जिसको भी classes नहीं करने हैं, you all can leave the class because attendance already mark हो चुका है. I don't feel like I'm teaching 17 students class right now. Thanks, Neeraj. चलो. Anyone else apart from Neeraj? किसी और ने कर लिया? चलो, thanks सुमित. So we'll go here. ठीक है, अभी हम इसका folder structure समझते हैं before we do anything. Now, the first one is your node modules. ठीक है. So what is a node module? And हमने node देखा, ठीक है, node.js होते हैं, ठीक है. Node is what you can code your JavaScript inside the server, right? अब वहाँ पे आप करके अपना backend का flow, logics and everything आप वहाँ पे define कर सकते हो. All right. Now उस जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे यू सी जेस मॉड्यूल, ठीक है, इसका सारा का सारा कोड जो है ना वो इसके अंदर लिखा हुआ है. सो दैट इट हेल्प्स यू, आप अपना वो यहाँ पे लॉजिक रन कर सकते हो, राइट. नाउ इफ आई क्लोज दिस एंड आई कैन गो हियर इन package.json, ठीक है, आई कैन सी द नेम ऑफ माय ऐप, आई कैन सी द वर्जन. तो ये चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है. ठीक है, देन देयर आर सम डिपेंडेंसीज, ठीक है. Then you see there is web vitals है, react dom का package है, there is a package, ठीक है. Alright everyone, I think ये आपको दिख रहा होगा. Just give me a moment, I'm getting a call. Alright, चलो. So there are dependencies here, ठीक है. Testing library DOM, ठीक है, DOM dependency आपके पास. Now what is a dependency everyone? तो मेरे को बता सकता है what is a dependency? And before that, can anyone tell me what is a package या module? Okay, ठीक है नीरज. तो जैसे पता होगा ना कि व्हेन यू राइट अ फंक्शन, आप सी प्लस प्लस में जावा में कोड करते हो, यू राइट अ फंक्शन. फंक्शन इज व्हाट अ लाइन ऑफ कोड बार बार यूसेज हो रहा है, ठीक है. सिमिलरली देयर बी सम इंस्ट्रक्शंस जो बार बार यूसेज हो रहे हैं उनके, है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से द राउटिंग, ठीक है, तो राउटिंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेस कोड विल बी द सेम. सो मैं बार बार क्यों उसको लिखूं, रादर देन व्हाई शुड नॉट आई क्रिएट अ मॉड्यूल फॉर दैट, ठीक है. तो मॉड्यूल क्या होता है? इट इज अ सिंगल फाइल दैट प्रॉब्ली हैज सम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो कि हम बार बार रीयूज कर सकते हैं. नाउ अ पैकेज इज समथिंग दैट हैज कलेक्शन ऑफ दीज मॉड्यूल्स. दिस इज क्लियर, राइट? इसलिए आप जब भी कोई ना पैकेज इंस्टॉल करते हो, यू यूज दिस कमांड npm, है कि नहीं? तो व्हाट डज npm स्टैंड फॉर? डज एनीवन नो? npm, it stands for node package manager, ठीक है. What is a package? Package is a collection of modules. What is a module? Line of code that you can again and again. ठीक है. जैसे क्या होगा ना, जब आप आगे एपीआई यूज करोगे तो उस केस में हो सकता है आप Axios यूज करो. सो Axios इज अ पैकेज. आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है. चलो, नाउ आई टॉक्ड अबाउट डिपेंडेंसी. नाउ डिपेंडेंसी क्या होता है? डिपेंडेंसीज आर दोस पैकेजेस जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड है फॉर योर एंटायर प्रोजेक्ट टू रन, है ना. अच्छे से रन करने के लिए वो पैकेजेस आपके लिए नेसेसरी हैं.
अब एक तरह का आपको और डिपेंडेंसी मिलेगा जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स सी इफ इट इज रिटन। आई डोंट थिंक, ठीक है। एक एक होता है डेव डिपेंडेंसी, इफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिपेंडेंसी एंड देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड डेव डिपेंडेंसी। नाउ ये भी पैकेजेस होते हैं, ठीक है, बट दे आर ओनली रिक्वायर्ड while you're developing the application, developing or testing, you can समझ रहे हो। सो दे आर ओनली रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। एक बार आप प्रोडक्शन में पुश कर दो उसे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दोस dev dependencies. I hope the dev dependency is also clear to you guys. ठीक है, चलो now let me go here. चलो हमने हमने देखा कि ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या है ना। पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर भी व्हाट इज हैपनिंग इज देयर कुड बी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। इससे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लॉग डॉट जेसन में होता है। जैसे कि जो हमने डिपेंडेंसी को यहाँ पे देखा होगा, सेम डिपेंडेंसीज विल आल्सो, बट हियर इट विल बी मोर इंफॉर्मेशन, राइट। सो वर्जन्स होंगे उनके, ठीक है, एंड मोर थिंग्स आर देयर। सो ये हमारे काम के नहीं है, हम नहीं छेड़ते, हम पैकेज लॉग डॉट जेसन को नहीं छेड़ते, हम पैकेज डॉट जेसन को छेड़ते हैं कभी कभी, ठीक है। नाउ readme.md I have already taught you, बताया मैंने आपको कि what is the readme.md file, right? चलो now you see there is JSON written here, ठीक है। what is JSON, can anyone? Everyone, JSON का फुल फॉर्म बता दो मेरे को। हाँ, स्टोर एंड यूज फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा, राइट। सो JSON का फुल फॉर्म, कैन एनीवन टेल मी? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। तो क्या हो रहा है ना, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है जिसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से, है कि नहीं। नाउ देयर कुड बी अदर वेज और टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हम CSV फाइल में कर सकते हैं, है ना सुमित। हम CSV फाइल में भेज सकते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट में भेज सकते हैं। जैसे अगर मुझे अपना नेम भेजना है किसी को, सो आई कैन मेक अ CSV फाइल जहाँ पे आई कैन राइट नेम एंड नीचे में मैं लिख सकता हूँ सुमित, ठीक है। फिर ऐसे ही इधर जाएगा मेरा एज, ठीक है, नीचे में लेट्स आई एम अज्यूमिंग सुमित इज लेट्स से 20 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह से चीजें जा रही है। तो दिस लेट्स से ये आपका CSV फाइल है, तो ऐसे भी जा सकता है। और आई कैन सेंड इट इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट एज वेल। नेम इज इक्वल्स टू सुमित, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू 20, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एफिशिएंट वेज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ठीक है। एपीआई के थ्रू जाओ, कैसे भी जाओ करके, वन ऑफ द बेस्ट वेज, ठीक है। तो दैट इज व्हाट योर जावास्क्रिप्ट का लुक्स लाइक, ठीक है। सो यू कैन सी कैसे स्टार्ट हो रहा है। सो यू गिव अ नेम, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, यू स्टार्ट अ कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर प्रॉब्ली हो सकता है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज इन इट, ठीक है। तो आप उसको उस तरह से डाल सकते हो। देयर कुड बी डायरेक्ट वैल्यूज एसोसिएटेड से स्टार्ट का यहाँ पे हो रहा है। चलो ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर जेसन, राइट। नाउ यू सी दिस इज अ स्क्रिप्ट रिटन हियर, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक दिस इज स्क्रिप्ट स्टार्ट, उससे क्या फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, इफ आई राइट नोड पैकेज मैनेजर npm स्क्रिप्ट स्टार्ट, ठीक है। ओके, सॉरी,
Am I in the wrong? Okay, yeah, I am in the wrong one. ठीक है, मेरे को चेंज करना पड़ेगा. CD, ठीक है. Now I'll start here. npm start. चलो देखो, मेरा लोकल होस्ट 3000 पे आई हैव दिस विजिबल. ठीक है, दिस माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप. नाउ क्या हुआ, ये कैसे रन किया? क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट रन किया. स्क्रिप्ट का नाम क्या था? स्टार्ट. सो आई टोल्ड npm टू रन द स्क्रिप्ट दैट इज बाय द नेम स्टार्ट एंड रन स्क्रिप्ट. इसको मैं नेम चेंज भी कर सकता हूँ. आई कैन राइट dev. इन दैट केस आई रन npm dev एंड स्टिल माय स्क्रिप्ट विल स्टार्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो. होप इज दिस इज क्लियर टू यू गाइस. एनीवन कंफर्म? यहाँ पे कुछ ESLint कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो इंस्टॉल्ड है. ESLint हमें कहाँ करता है? एरर हैंडलिंग में हेल्प करता है, ताकि हमें पहले ही रन करने से पहले ही पता चल जाए कि हमारे पास कुछ एरर्स है कि नहीं है हमारे कोड पे. ठीक है, चलो. Now there's this git ignore. It tells what all things to ignore while we are pushing it to the GitHub. जैसे कि मुझे ये नोड मॉड्यूल्स डालने की जरूरत नहीं है. बिकॉज नोड मॉड्यूल्स आर वेरी हैवी फाइल्स. और जब मैं इंस्टॉल करूंगा ना अपने फोन पे, सॉरी अपने डिवाइस पे, या फिर सुमित मेरे साथ ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो उसे बस npm इंस्टॉल हिट करना है अपने कमांड लाइन में, CLI में, राइट. और उसका कंप्लीट वो जो भी पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे. तो मुझे वो पूरा बार बार भेजना एंड सुमित को बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है एवरीवन? ऑलराइट, चलो. नाउ देयर इज दिस पब्लिक फोल्डर. ठीक है, पब्लिक फोल्डर में क्या होता है ना, यू हैव सम थिंग्स दैट आर पब्लिक अवेलेबल. ठीक है, आप कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है. सो यू कैन सी देयर इज favicon.ico, index.html, log192.png. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, आई गो हियर. ठीक है, आई गो स्लैश logo 192, sorry, .png. if I run this you can see यहाँ पे मेरे को लोगो विजिबल हो रहा है कि नहीं? बिकॉज इट इज पब्लिकली अवेलेबल. आई कैन ऑल्सो गो favicon.ico. ठीक है, see I'm getting the icon here. I hope this is clear. ठीक है. Now similarly I have this index.html. बट हमने तो ये सोचा था ना कि when we are using React हम पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, राइट. बट व्हाट हैपेंस इज कि जो आपका जावास्क्रिप्ट है, दैट इज स्टैटिकली रेंडर्ड यूजिंग दिस HTML फाइल इटसेल्फ. ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, लेट मी गो बैक. ठीक है, आई क्लिक हियर टू इंस्पेक्ट टूल. ठीक है, इसी ये जो यहाँ पे जो आपका लोड हो रहा है, दिस इज योर HTML. कि नहीं? चलो, इफ आई क्लोज दिस and I go here, I'll go slash index.html. ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जो हमारा जो पहला फाइल दैट इज बीइंग एक्सेस, हम कभी भी अपना रन करते हैं ब्राउजर में अपने वेबसाइट को, दैट इज index.html. इसलिए व्हेन आई रोट index.html यू कैन सी नथिंग चेंज्ड बिकॉज़ इट इज इनसाइड द index.html. मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है. If I remove this, it will be the same page again. I hope this is clear to everyone. ठीक है, let me just copy this and I'll remove this completely. ठीक है, let me write a boiler template. Now if I save it, you see सब गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मैंने एक चीज हटा दी है, and that is the most important thing here. कैसे लोड हो रही है ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे? तो दिस स्पेसिफिक लाइन id is equal to root. Now if I save it and I go here, you see सब चीजें आ गई यहाँ पे. सो ये id root ये जो हर एक चीजों को लोड करा रहा है, दिस root is somewhere there जो सारा का सारा इंफॉर्मेशन इनको फीड कर रहा है. Basically what is happening is the DOM manipulation that we had talked in earlier classes. Now document is visible here, so I can definitely change my title from
हियर, सो मैं इसका नाम रखता हूँ अगेन फर्स्ट, ठीक है, and I save it and I go here, you can see the title changes, ठीक है, everything is being rendered through here. अब ये आईडी रूट है कहाँ, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है, लेट्स सर्च दिस. तो पब्लिक में तो होगा नहीं, ठीक है, हम सोर्स से भेज रहे होंगे, तो एसआरसी अब कहाँ पे होगा, let us understand this. Let's open app.js and let us find this one. So is there any ID by the name root? No, you're not able to find this. Let's go to index.js. You see, यहाँ पे there is this app. ये ऐप का क्या हो रहा है यहाँ पे, const root is equal to react dom create root get element by id root. अगर मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ omg, ठीक है, and I go and I save this and I go back to my website, कुछ भी नहीं हो रहा है. I go to this index.html, ठीक है, where is it in the public folder, और मैं इस रूट को भी चेंज करके कर देता हूँ omg, ठीक है. लेट अस सेव दिस, सी वापस से विजिबल हो रहा है. ऑलराइट एवरीवन, आपको समझ में आ रहा है ये चीजें, व्हाट आई डिड हियर? सुमित, इज इट व्हाट आई डिड हियर? मैंने, ठीक है, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो पहले ये रूट कहला रहा था, मैंने इसको omg नेमिंग दिया, बट अगर क्योंकि मैंने omg नेमिंग दिया तो इट वोंट वर्क, बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लोड हो रहा है index.js इज बाय द नेम रूट, पहले लोड हो रहा था, राइट. सो इस मैंने रूट को चेंज करके omg कर दिया. सो लेट मी जस्ट कीप इट टू रूट सेल्फ, ठीक है, बिकॉज इट्स अंडरस्टैंडेबल. चलो, ऑलराइट एवरीवन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इस रूट पे इसको, हमने किसका रूट क्रिएट किया, इस गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी रूट का हमने यहाँ पे क्रिएट किया, उसको भी हमने नेम क्या दिया, रूट दिया, ताकि हमें अंडरस्टैंडेबल हो कि व्हाट नेम वी वर यूजिंग. अगर हम बहुत सारे डिफरेंट नेम्स यूज करेंगे ना, देन विल गेट कंफ्यूज. तो व्हाट वी डिड, रूट डॉट रेंडर. तो व्हाट इज रूट डॉट रेंडर? रेंडर मींस कि हम यूआई में उसको रेंडर कर रहे हैं, राइट, नेम सजेस्ट, राइट, उसको यूआई में विजिबल करा रहे हैं, राइट एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन? चलो, now in the index.css you can see आपने पूरे बॉडी को कुछ css दिया हुआ है, ठीक है. you are using some font family, you can change this as well, ठीक है. आप you can now install in this tailwind as well, ठीक है. जब आप tailwind पे जाओगे, let's see, we are not going to use it, ठीक है. तो मैं just to make you understand, let me go with the next.js, ठीक है. so you can use tailwind by this thing, right? so npm install tailwind css, ठीक है, आप इसे tailwind इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है. आई होप दिस शुड बी क्लियर. सो tailwind एंड एवरीथिंग हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम आज मैंने आपको सब समझाने के लिए डायरेक्ट रिएक्ट इंस्टॉल किया है, पर हम कल वाइट के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, ठीक है. लेट मी सी इफ एनीथिंग इज लेफ्ट दैट मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है. ऑलराइट, आई थिंक I think most of it is clear. I think it should be clear to you guys. ठीक है, सच कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है नहीं बिफोर वी द प्रोजेक्ट, ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट मी गो बैक, लेट मी क्लोज दिस, और एक काम कर, लेट मी गो टू src, लेट्स गो टू app.js, ठीक है. यहाँ पे सब चीजों को हटाता हूँ. Let me just remove everything here, and I'll get an h1 tag. Let's write my first React app, ठीक है. हमने ऐप के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे दैट शुड बी विजिबल हियर ऑन आवर वेबसाइट, ठीक. माय फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ठीक है. अगर मैं और नीचे चला जाता हूँ, आई विल गिव अ p tag, ठीक है, एंड आई विल राइट दिस इज द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड आई सेव इट,
ठीक है, I'll go here, this is the description has been saved. Now again, ये एक center क्यों align हो रहा है, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, I have not given here anything that is being centered. This is a class name app, ठीक है. Now when we go this app.css, so you see यहाँ पे दिया हुआ है text align center, ठीक है. If I let's say left, and I save it and I go back, you see left alignment हो रहा है मेरा. Hope this is clear everyone, कि हमने कहाँ पे चेंजेस किए, कहाँ पे क्या चीजें विजिबल हो रही हैं, है ना. अब ये ऐप कैसे काम कर रहा है एक्चुअली, यू सी app.js के अंदर मैंने चेंजेस किया, आई हैव नॉट चेंज index.js, क्योंकि मैंने app.js का यहाँ पे यू कैन सी मैंने एक यहाँ पे बनाया हुआ है ऐप नाम से. नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल रीडायरेक्ट मी टू दिस पेज, ठीक है. सो index.js में मैंने ऐप को इंपोर्ट किया हुआ है. ऑलराइट एवरीवन, सो यू सी वेयर हैव इंपोर्टेड ऐप फ्रॉम स्लैश ऐप, ठीक है. नाउ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इज ऐप, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, एंड आई राइट द नेम टू लेट्स से हीरो, obviously I cannot export anything by the name hero because hero doesn't exist, तो मेरे को इसका भी नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. Now since I have exported via hero, if I go here to my first React app, ठीक है, I'll write it as hero, ठीक है, from this app, ठीक है. तो फिर again this will be working again, alright. So यहाँ पे मेरे को डालना होगा instead of app I'll be writing hero, alright. So मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा and see everything is working fine. I hope this is clear to you guys. So name इसका मतलब is mean the concern is that you can use any naming you want, right? But the thing that you're going to use should be standard and confusing नहीं होना चाहिए. Since I writing the folder name as app, फिर मैंने यहाँ पे hero डाल दिया, it is very confusing. So use what कि हर बार use हो रहा है, ठीक है, हर चीज से same हो. I hope this is clear to you guys. Chalo, let me just close this. Control C. Let me clear it out. Okay, let me close this. Let me go back. And यहाँ पे हम एक बनाते हैं अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं, इट नेक्स्ट ऐप, ठीक है. So let me just copy this. Let's go here and let's paste this. ठीक है. I'll go yes. Now you can see my project नाम से और next package has been installed. ठीक है, is getting installed, right? तो यहाँ पे देखना फोल्डर स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस होंगे. यू आर नॉट सीइंग एन एसआरसी फोल्डर हियर ऑन द टॉप, यू आर सीइंग एन ऐप फोल्डर, ठीक है. सो ये सब चीजें आपको दिखेंगी, थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा. नाउ इन दिस व्हेन आई गो, ठीक है, इवन इफ आई ओपन ऐप, ठीक है, आई एम ओपनिंग द पब्लिक फोल्डर, ठीक है, एवरीथिंग हैज बीन ओपन, राइट, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस, विजिबल है ना. यू डोंट सी एन एचटीएमएल फाइल अभी, ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल फाइल वो खुद से लोड कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्सटर्नली नहीं शोकेस कर रहे हैं the HTML file. I hope this is clear to everyone. So this is a folder structure of a Next.js file. ठीक है, तो अगर मेरे को कोई भी यहाँ पे बनाना है, I can go in the app, I can create a folder, फिर मैं उसके अंदर चीजें कर सकता हूँ. मेरे को लेआउट डिसाइड करना है. So layout is what पेज का कुछ लेआउट होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा, that I can decide from here already. ठीक है, आपके पेज का यहाँ पे होगा. So this is using TSX. ठीक है, I can go and do it in. और TypeScript is clear everyone? आपको TypeScript पता है? Although we haven't taught it, does anyone know TypeScript? And what is the difference between JavaScript and TypeScript?
Sumit, anyone knows the difference between the JavaScript and TypeScript? You don't know? Okay. देखो, JavaScript TypeScript में बहुत ज़्यादा difference नहीं है, ठीक है? TypeScript is built on top of your JavaScript, ठीक है? एक बस वो वर्जन आगे है. डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ. TypeScript टाइप सेफ्टी देता है, नाम से सजेस्ट करता हूँ, ठीक है? मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे. So TypeScript gives type safety to JavaScript, ठीक है? Now what do you understand by type safety? आपको याद है, आप जब आप C++ यूज करते हो, यू यूज समथिंग लाइक int a is equal to 10, राइट एवरीवन? आप यू यूज दिस थिंग, राइट? बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, व्हाट यू डू इन जावास्क्रिप्ट इज you probably write, let's say, const a is equal to, let's say, 10, and then probably you can define as a is equal to, again if I define, yeah, a is equal to, let's say, अभी this 10 and this 10 is different, right? So हो सकता है ना कि आगे जा करके there could be some confusion, जो आगे जाके it can cause an error, ठीक है? that could have been resolved much earlier. So इसीलिए we give it a type, ठीक है? हम इस const a को type देंगे कि it's an integer, so we'll tell it, sorry, so const, let's say, a को मैं कहूंगा that it is an integer type, ठीक है? So it kind of looks like that, ठीक है? I'll tell it that you're an integer so that it does not accept a value like this. I hope this is clear, ठीक है? Nothing more than that. And if you're confused with things, just write any, but it is not recommended, ठीक है? So यहाँ पे TSX is more preferred, but you can also use your JavaScript. All right. So I'll tell you is what, after this class, YouTube में research करो what is TypeScript. Just learn it. 1 से 2 घंटे का कोई lecture होगा, देख लो before the next class. All right, everyone. चलो ठीक है. So it's already 9:40. I won't move any further in the class क्योंकि मेरा जो था मैंने GitHub आपको करा दिया, ठीक है? You know the folder structure of React.js, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत typical idea मिल गया folder structure of Next.js. I think probably sir will be teaching you React with White. Next.js will keep a bit in the last week, ठीक है? हम थोड़ा बहुत Next.js सीखेंगे, ठीक है? मेरे को बताओ आपको कोई डाउट है इस क्लास में? If you have any doubts, please let me know. If something was not clear with GitHub. Okay. So Git के please commands आप लोग सीखना, ठीक है? Go. This is your homework. First is explore TypeScript, ठीक है? Then there are few commands like git, ठीक है? Then there is git clone. क्लोन का यूज क्या होता है? आप किसी दूसरे के लाइब्रेरी को, सॉरी, रिपोजिटरी को भी अपने लैपटॉप पे VS कोड में क्लोन कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू पेस्ट द यूआरएल उस रिपोजिटरी का, ठीक है? एंड इट शुड बी पब्लिक, या फिर यू शुड हैव एन एक्सेस टू दैट. आपको कोलैबोरेटर एक्सेस होना चाहिए इफ इट इज अ प्राइवेट रिपोजिटरी, ठीक है? सुमित, आप समीर सर को टैग करो in the group. I am not the one responsible for that. ठीक है? Samish sir will be providing you the recorded lectures. ठीक है? So please tag Sumit, Samish sir in the group. Any other doubts, guys? So I'll make you understand a few last things, ठीक है? जो before I end the class, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आप जब भी कल को अगले क्लास में टेलविंड इंस्टॉल करोगे ना, तो what sir will be doing is he will be making you paste few things inside some other files, ठीक है? जैसे for example, let me just go here.
Okay, not here. Let me just go back. Let's go to the React router. आई थिंक अभी वो चीजें हट चुकी हैं, इट्स नॉट देयर. So पहले हमें एक चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ती थी. ओके, सो आई विल टेल यू दैट. So earlier we had to specify something that Tailwind will be used inside which extensions. So we had to specify .js, right? JSX, TS, ठीक है, TSX, and it could be their root folders उनके अंदर जो होंगे, and it's सब रूट फोल्डर्स की उनके अंदर और कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं. ठीक है, तो काइंड ऑफ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता था जो हम डालते थे. इट्स नॉट देयर, इट्स ऑल अच्छी बात है. सो आई थिंक इंस्टॉलेशन का तरीका चेंज हुआ है. ऑलराइट, ठीक है. I'll be stopping the recording now.